2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट, ऐसे कई क्रांतिकारी कदम इस सदन में उठाए गए और मुझे इसके कहने में गर्व है कि कई इन सब जो क्रांतिकारी कदम उठाए गए उन सब में अधिकतर तौर पर सर्वसम्मति से इस सदन ने उन कानूनों को पारित किया। ये भारत की जो लोकतंत्र है उसकी सही जो क्षमता है, जो सही उसकी शक्ति है, उसको दर्शाती है। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले सभापति महोदय 2-3 बातों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। सुप्रिया सुले जी ने भी उन बातों का जिक्र किया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 1952 से लेकर 1971 तक भारत की संसद लगभग 120 से लेकर 130 दिन साल में मिला करती थी। 1971 से लेकर वो जो समय है वो कम होता गया और ये लगभग घटकर 2014 तक लगभग 80 से 85 दिन तक रह गया और 2014 के बाद वो और घटकर 45 से 50 दिन तक रह गया। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे इस सदन ने कानून पारित किया था कि किसी भी मंत्रिमंडल में 10% से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बनेंगे, हमें एक कानून पारित करना चाहिए कि भारत की संसद लगभग 120 से 130 दिन हर वर्ष मिलेगी और ये अधिक जरूरी है हमारी विधानसभाओं के लिए। कई विधानसभाएं ऐसी हैं जो साल में एक हफ्ते के लिए मिलती हैं। ये किस तरह का लोकतंत्र है? और इसलिए ये प्रावधान करना जरूरी है कि जो बड़े राज्य हैं उनकी विधानसभाएं 100 दिन तक मिले, जो छोटे राज्य हैं उनकी विधानसभाएं 75 दिन तक मिले। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से सदन में कानून पारित हुआ जिसको हम 10th शेड्यूल कहते हैं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है। शायद समय आ गया है कि उस एंटी डिफेक्शन लॉ को भी दोबारा से हम अपने संज्ञान में लें, क्योंकि जो उसका मूलभूत उद्देश्य था, उसका मूलभूत उद्देश्य वो पूरा करने में असफल रहा है। जो पिछले कुछ वर्ष की घटनाएं हैं वो उसको बहुत साफ तौर पे प्रमाणित करती हैं, पर जो हमारी संसदीय प्रणाली में लोकतंत्र है उसके ऊपर उसका बहुत नकारात्मक असर पड़ा है। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि सदन में जो सत्ता का दल है, सत्तारूढ़ दल है, उसका अपना एक स्थान है। ये सदन जरूर जो विधेयक सत्तारूढ़ दल लेके आता है उसको पारित करने में के लिए बना है, पर इसके साथ साथ इस सदन में विपक्ष का भी एक स्थान है। जो विपक्ष के मुद्दे हैं, जो इस देश के मुद्दे हैं, जो शायद जो भी सत्ता पक्ष में बैठा हो, हम भी वहां बैठते थे, आज ये बैठते हैं, कल घटनाक्रम क्या रहेगा, कभी कभी उनके अनुकूल नहीं होते। पर संसदीय प्रणाली हमारी तब मजबूत होगी अगर वो जो सत्तारूढ़ दल के लिए भी चीजें अनकंफर्टेबल हो, वो भी पूरी तरह से इस सदन में उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सितंबर 2020 से इस सदन में चीन के ऊपर एक बारी भी चर्चा नहीं हुई है, जो हमारे सामने सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती है। आखिर में मैं बस एक बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं सभापति महोदय, ये सब 70 साल में संभव इसलिए हो पाया क्योंकि जो संविधान के असूल थे, संविधान की बुनियाद थी, जो उसकी मूल भावना थी, उसके प्रति हम पूरी तरह से समर्पित रहे और जो संविधान निर्माताओं का ख्याल था हमने उसके ऊपर पूरी तरह से खरे उतरने की कोशिश की। मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस देश में ये बहस बंद होनी चाहिए कि भारत का जो संविधान है उसकी जगह हम कोई और संविधान लेके आएंगे। इस चर्चा से भारत नकारात्मक रास्ते पर चलता है और भारत का जो लोकतंत्र है वो कमजोर होता है। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती लॉकेट चैटर्जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। I am greatly honored that you have allowed me to put my views on the auspicious occasion of 75 years of our great parliament journey. Bande Nitarang Bharat Vasudham Divya Himalaya Ganga Yamuna Saryu
कृष्ण शोभितो सरसामः, देवभूमि हिमालय, गंगा, यमुना, सरयू, कृष्णा और कई नदियों के साथ चमकने वाली भारत की भूमि को मेरा नमन। अध्यक्ष जी, 75 वर्ष के समयकाल में संविधान सभा के गठन से आज तक भारत निरंतर विकास के नई आयामों को छू रहा है। Days after Bharat overwhelmed the world by landing Vikram on the unexplored south pole of the moon, an achievement Modi ji monitored every moment. A big shining diamond was added to the crown of Bharat Mata when Bharat hosted G20 summit. G20 के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी देश में 60 शहरों में 200 से ज्यादा सफल बैठक हुई, जो अपने आप में हिस्टोरिकल बन गया। अध्यक्ष जी, कभी इस देश की सत्ता पर बैठे लोग केवल एक परिवार की बात करते हैं, परंतु आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत वसुधैव कुटुंबकम, जो सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है, उसका संदेश संपूर्ण विश्व को दे रहा है। मोदी जी said, and I quote, India's successful moon mission is not India's alone. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. We must know that Bharat is the first nation who has reached South Pole as no other country could have reached there. The able and effective leadership of our Prime Minister and this government could have made it possible. Atul Prasad Sen had written, Bharat abar jagot sabhay shreshto ashono lobe. Bharat will once again reclaim her seat in the world stage. ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম, আমরা রয়েছি সেই সূর্যের দেশে। आज वही सूर्य पर आप भारत आदित्य L1 लॉन्च कर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। बहुत दुख की बात है, विपक्ष वाला जो लोग हैं इसको लेकर भी राजनीति करते हैं। मैं बस उनसे इतना कहूंगी कि आपके पड़ोसी मुल्क इसलिए खुश है कि उनके झंडे पर चांद है। आप लोग इस बात पर गर्व कीजिए, हमारा तिरंगा आज चांद पर है। विश्व के जो अब देश भारत आएंगे वो सपेरे का खेल नहीं देखेंगे, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के कद को बढ़ना देखेंगे। Following Bharat's independence from the British rule in 1947, its members served as the nation's first parliament as the Provisional Parliament of Bharat. The assembly met for the first time in New Delhi on 9 December 1946, and its last session was held on 24th January 1950. The first task of the assembly is to free Bharat through a new constitution, to feed the starving people and to clothe the naked masses, and to give every Bharatiya the fullest opportunity to develop himself according to his capacity. This is certainly a great task. आज हम यहाँ बैठे हैं, एक दिन हमारे पूर्वज भी यहाँ बैठकर देश का संविधान को निर्माण किया था। मैं इसको नमन करती हूँ। अध्यक्ष जी, आजादी के बाद से अच्छे बुरे हर प्रकार के कालखंड को इस देश को लोगों ने देखा है, परंतु हमारा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास सदैव अटल रहा है। किसी ने कहा है कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हर हालत में जीने का हुनर आता है हमें। 1952 में हुई लोकसभा बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, नेहरू जी ने इसी सदन में ये कह दिया था कि आई विल क्रैश द जनसंघ, और उसका जवाब देते हुए हमारे आदर्श डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि आई विल क्रैश दिस क्रैशिंग मेंटालिटी। किसी भी लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों को ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम एक लंबे कालखंड एक विपक्ष में रहे हैं। हमने तो वो समय भी देखा है जब हमारे मात्र 2 सदस्य होते हैं और पक्ष के लोग हम दो हमारे दो बोल के मजाक उड़ाते थे। वही अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और आज भी वो भविष्यवाणी सच होती जा रही है। इस देश की 140 करोड़ जनता ने हमें लोकतंत्र के इस मंदिर में लगातार 2 बार बहुमत से भेजा है। अध्यक्ष जी, हमने इसी संसदीय यात्रा में एक समय वो अभी देखा है जहां 1962 का युद्ध हारने के बाद नेहरू जी की शांति नीति के विरोध में उनके द्वारा नामित सांसद और प्रसिद्ध कवि दिनकर जी ने संसद में अपनी नाराजगी व्यक्त करने कहा था कि रे रोग युधिष्ठिर कौन है यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा,
लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंजे उठे हर हर बम बम का फिर महोच्चार। जो विपक्ष आज लोकतंत्र पर बड़े बड़े भाषण करते हैं, वो विपक्ष इमरजेंसी पर क्यों मौन है? जिस विपक्ष के युवराज आज विदेश में जाके भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया बोल के भाषण देते हैं, आज मैं उसको याद दिलाना चाहती हूं, उनका दादी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इस देश में इमरजेंसी लेके आया था। अध्यक्ष जी, 1975 में एक व्यक्ति की सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया गया। अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जयप्रकाश नारायण जी, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे विपक्ष के नेताओं और समाज के प्रमुख लोगों को जेल जाना पड़ा। यहां तक कि इस सदन में अधिकारों को भी समाप्त कर दिया था, मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। परंतु उन लोगों के शायद इतिहास को समझ में कम आती थी कि ये तानाशाही यहाँ पे स्वीकार नहीं होगा। ये देश लोकतांत्रिक मूल्यों का जीता जागता उदाहरण है। अत्यंत परिणाम आपके और हमारे सामने हैं। कबीर का एक दोहा है जो शायद वर्तमान में विपक्ष पर सटीक बैठता है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। अध्यक्ष जी, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के केवल राजनीति के कारण इस सदन के माध्यम से पलट दिया था और मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों को वंचित कर दिया था। परंतु वो भूल गए थे कि द पार्लियामेंट always made efforts to make upliftment of Nari Shakti, poor and weaker sections of the society. इसी सदन में जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने 3 तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिला को आत्मसम्मान से जीने का मौका दिया है। कांग्रेस सरकार द्वारा कश्मीर में धारा 370 लगाकर उसे विकास के मुख्य धारा से अलग करने का प्रयास किया, परंतु हमने हमेशा कहा था जहां हुई बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। और आज धारा 370 समाप्त कर जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। This House also witness of many historical debates from midnight freedom to debate on citizenship amendment bill. The CAA was passed to provide India citizenship to the illegal migrants who entered India on or before 31st December 2014. इसी सदन में 73वां 74वां संविधान संशोधन पर महिला को पंचायत में 33% का आरक्षण दिया है। वही सदन में परमाणु प्रशिक्षण और वैश्विक नीतियों पर भी चर्चा करते हैं। The House passed the 124th Constitution Amendment Bill 2019, providing for people from economically weaker sections to avail of 10% reservation in government jobs and educational institutes. This Parliament approved the Unlawful Activities Amendment Bill 2019, which gives the power to the centre and states to declare any individuals as terrorists and confiscate their property. This act definitely a correct procedure to make my country more secure. I also must acknowledge that since last 70 years, this auspicious House has passed many acts which have shaped our country. This include Right to Education Act, Right to Information Act, Information Technology Act, Panchayat Raj Act, and मैं वन नेशन वन राशन कार्ड, 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन देना, इंटरनेशनल मिलेट सीआर, ये सब यही 75 साल में घोषणा हुआ। जब अटल जी ने नेता प्रतिपक्ष के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने उन्हें जेनेवा भेजा था पाकिस्तान को मंसूबे पर पानी फेंकने के लिए, अटल जी राजी हो गए क्योंकि उस समय राजनीति की नहीं देश जरूरी था। तब कांग्रेस ने बोल रहा था कि ये राव साहब का चाल है, लेकिन वाजपेयी जी ने कहा था देश हमारी प्राथमिकता है, राजनीति नहीं। अटल जी जेनेवा गया और देश को जिता के लेके आया। सर, हमारे लिए सबसे पहले देश है, पर कुछ लोगों के लिए देश से बढ़कर एक परिवार है। इसी सदन में देखा है कैसे 1971 में पाक से युद्ध के दौरान वैचारिक मतभेद होते हुए भी कैसे जब राष्ट्र की बात आए तो तब हमारे वरिष्ठ नेता, तत्कालीन नेता विपक्ष अटल जी ने सदन में माध्यम से इंदिरा जी का सरकार को समर्थन किया है। आज का ये विपक्ष समर्थन तो दूर की बात है, सेना के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह रखते हैं।
However, this House also witnessed the fall of Vajpayee government by only one vote. A BJP Prime Minister was ousted by the single vote of a Congress Chief Minister. It was one of the most unfortunate incident in Indian Parliament. सुषमा स्वराज जी ने एक बार सदन में कहा था कि इस सदन में सत्ता को स्थानांतरण कभी भी गोली और बम से नहीं होगा, पर सर आज बंगाल में लोकतंत्र के पर्व से हिंसा हो रहा है, लोग मर रहा है. सर, आई रिप्रेजेंट वेस्ट बंगाल फ्रॉम where Kobiguru Rabindranath comes, where Netaji Subhash Chandra was, 2 minutes, sir, where Netaji Subhash Chandra was flourished, where Swami Vivekananda was born, where Ishwar Chandra Vidyasagar served. My state was the epic center of democratic norms and value. ये हमारे वेस्ट बंगाल से बहुत सारा सीनियर जनप्रतिनिधि ये 75 सालों में यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एनसी चैटर्जी, हिरेन मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, ज्योतिर्मय बसु, सोमनाथ चैटर्जी, इंद्रजीत गुप्त, प्रियरंजन दासमुंशी, गणिकांत चौधरी, तपन शिकदार. When I speak of crisis, one cannot ignore the threats Bharat and the world continues to face. The recent sacrifice of our brave soldiers at Anantnag is a reminder that our enemies are still not ready to backtrack despite the losses they have suffered when Modi ji gave an effective reply to the 2019 Pulwama attack. No Congress government had ever dared to send its soldiers across the LOC to destroy the terrorist camps on Pakistan soil. But Modi ji ने पाकिस्तान को जवाब दिया, तब एविडेंस मांगने लगे. सर, ये तो वो लोग हैं. एक मिनट, और ना मैं पॉलिटिक्स कर रहा है, लोगों ने वैक्सीन तक भी पॉलिटिक्स किया था. सर, आज कल प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था, मैं उसको शुभकामना देती हूं और उनके माध्यम से उनका नेतृत्व में भारत आज विश्व के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहुंच गया है. स्पीकर सर, आज भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है. प्रधानमंत्री जी ऑलवेज बोले हैं कि जीरो टॉलरेंस, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन सब लोग इसको लेके नाराज है क्योंकि बंगाली में एक कहावत है, सब एलोमेलो कोड़े दे माँ लूटे पुटे खाई, माने सब इधर उधर खरीदो, हम लूट के खाते हैं. आज मोदी जी का नेतृत्व में एक शक्तिशाली वैभवशाली भारत का निर्माण हो रहा है. मुझे एक गाना याद आ रहा है, भारत आमार भारतवर्ष, स्वदेश आमार स्वप्न गो, তোমাতে আমরা লোভিয়া জন্ম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো, কিরীটধারিণী তৃষার সিংহ সবুজে সাজানো তোমার দেশ, তোমার উপমা তুমি তোমার রূপের নাহি তো শেষ. সগণ গহন তমসা সহসা নেমে আসি যদি আকাশে তোর, হাতে হাত রেখে মিলি একসাথে আমরা আনিব নতুন ভোর. শক্তি দাইনি দাও মা শক্তি, ঘুচাও দীনতা ভীরু আবেশ, আধারে জননী ভয় কি জননী, আমরা বাঁচাবো এ মহাদেশ. রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ বীর সুভাষের মহান দেশ, নাহি তো ভাবনা করি না চিন্তা, হৃদয়ে নাহি তো ভয়ের লেশ. Thank you very much. Thank you very much. भारत माता की जय. श्री नमो नागेश्वर राव जी. Thank you, Chairman, for giving this opportunity to speak on 75 years journey of this country in this house. आज के दिन में आखिरी दिन है, ये हाउस को छोड़ के हम लोग नया बिल्डिंग में, नया पार्लियामेंट में जा रहा है. ये 75 साल में जो कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कई बिल्स ये हाउस में पास हुआ है. वो बिल्स का वजह से कुछ डेवलपमेंट भी है, कुछ तकलीफ भी है. इधर का लोग उधर हो गया है, उधर का लोग इधर हो गया है, मगर देश जो है ना एक तरह से आगे बढ़ रहा है. इस टाइम में हम लोग मॉर्निंग में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी जो स्पीच हम काफी अच्छी तरह से सुना है. वो भी इस मामला में एक देश को एक वादा देना चाहता है, आने वाला टाइम में हम लोग सब मिलके नया बिल्डिंग में नई तरीके से ये कंट्री को आगे ले जाने के लिए. और हम लोग पिछले हिस्ट्री अगर देखें तो जब जो राज्यांग निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो राज्यांग लिखा था, उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, ये सब महान भाव लोग वो राज्यांग का वजह से वो डेमोक्रेसी आज तक चला है. वो चलने का जो मंदिर जो प्लेस है, ये प्लेस बन गए.
उसमें अगर देखने से जो 75 साल में जो पहले जो स्पीकर था, जो बलवंकर साहब से लेकर अभी हम लोग ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला जी तक 17 लोगों को ये अवकाश मिला है। उसमें हमारा तेलुगु का फ्राइडे तेलुगु का भी 3 दफा हम लोगों को अवकाश मिला है। उसमें नीलम संजीव रेड्डी जी का, बालयोगी जी का और नीलम संजीव रेड्डी जी को 2 दफा अवकाश मिला है। उसी तरह से देखने से हम लोग का प्रधानमंत्री का भी जो पिछले 15 प्रधानमंत्री में ये हाउस में पीवी नरसिम्हा राव जी को हम लोग का तेलुगु का प्राइड है, तेलुगु का एक प्रधानमंत्री भी बन गया। ये तेलुगु प्रधानमंत्री जब बनने का टाइम में कंट्री का इकोनॉमी सिचुएशन जो है ना बहुत बैड था। उस टाइम में पीवी नरसिम्हा राव जी ने रिफॉर्म्स ले आने का वजह से अभी कंट्री ने इस तरह से जो है ना काफी आगे बढ़ रहा है। उसी को बाकी लोग भी आगे लेके जा रहा है। और ये जो नया मंदिर अभी जो हम लोग जो है ना न्यू पार्लियामेंट जब में कल जाने का है, हम लोग का ये डिमांड था जो राज्यांग निर्माता अंबेडकर जी का उस टाइम में जो है ना उसी का वजह से ये जो कंट्री का डेमोक्रेसी में विभिन्न जाति का विभिन्न मत का इस तरह से 75 चलने का बाद अभी जो नया जो बिल्डिंग में जा रहा है उसको अंबेडकर जी का नाम लगाने के लिए हम लोग मांग किया था। अभी हम लोग हमारा तेलंगाना बनने के बाद उसी अंबेडकर जी का 125 फीट का स्टैच्यू भी जो है ना इंडिया में पहले स्टैच्यू हम लोग लगाया था 125 फीट का। हम लोग ये डिमांड को अभी भी कम से कम कल इसको अंबेडकर जी का नाम से बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम ये अगर नया पार्लियामेंट में आने से उसमें अच्छा रहेगा बोल के हम लोगों का मांग है। उसका साथ अगर दलित का बारे में जो बात कर रहे हैं, पहले दफा हमारे जो तेलंगाना में दलित बंधु बोल के एक फैमिली को 10 लाख रुपीस हम लोग दे रहा है। 10 लाख रुपए दलित लोगों को दे रहा है। वो भी एक थोड़ा ये करे। और आने वाले में अभी 75 साल में अगर हिस्ट्री अगर देखने से पिछले पार्लियामेंट में हम लोग को 150 डेज तक पार्लियामेंट चलता था। अभी ये बात को कहीं जो है ना हमारा साथ भी बताया था। आज के दिन में जो पार्लियामेंट का जो डेज गिरते 56 डेज तक आ रहा है, इसका बारे में भी थोड़ा देखना चाहिए। और उसका जो है हम लोग का इसी हाउस में कुछ बिल्स ऐसा बिल्स आया था, फार्मर्स का बिल, सब 2 मिनट, फार्मर्स का बिल्स आया था, फार्मर का बिल्स को पास भी किया है इसी हाउस में जो है ना फार्मर का बिल्स को भी विथड्रॉ किया है। दिस इज द पीपल्स पावर, पीपल का पावर का वजह से ये सब हुआ है। ये भी जो है ना हम लोग जानना चाहिए। उसी तरह से हमारा डेमोक्रेसी का ब्यूटी, ये हाउस का ब्यूटी देखिए, 2 आदमी था बीजेपी का, 2 एमपी का बीजेपी आज के दिन में जो है ना देश को पाल रहा है। 2 नंबर से लेकर अभी जो है ना 10 साल से जो है ना ये जो कंट्री को चला रहा है। काइंडली कंक्लूड। अच्छा, बहुत मेंबर से बोलने वाले उसी तरह से सब हमारा तेलंगाना का हमारा नेता केसीआर साहब जब आए था उस टाइम में 2 ही तो एमपी था, 2 एमपी होने के बाद भी इसी हाउस में फाइट करके इसी हाउस में जो है ना देश का सब लोगों को हमारा जो डिमांड को तेलंगाना बनाने का डिमांड को तेलंगाना को लोगों का इच्छा को सबको बोलने का बाद 2 एमपी होने का बाद भी तेलंगाना को जो है ना बना दिया था। यही हाउस में 2014 में एपी रीऑर्गनाइजेशन एक्ट का बिल पास हुआ है, उसी का वजह से तेलंगाना बना है। वो तेलंगाना बनाने का वजह से आज के दिन में मॉर्निंग में तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात बता दिया था, बट क्रिएटिंग ऑफ तेलंगाना लेफ्ट बिटर मेमोरीज, मगर ऐसा नहीं था। आज के दिन में तेलंगाना देश में नंबर 1 है, तेलंगाना सब में नंबर 1 है। 24 आवर्स फ्री करंट जो है ना दे रहा है, 24 आवर्स फ्री करंट तेलंगाना दे रहा है। तेलंगाना में पहले दफा पर एकड़ 10,000 का हिसाब से फार्मर को दिया है। उसी तरह से पर कैपिटा इनकम देखे तो वी आर नंबर 1 इन इंडिया, पर कैपिटा पावर कंजम्पशन देखे तो वी आर नंबर 1 इंडिया। दलित बंधु ऑलरेडी बोला है। उसी तरह से हमारा 33 डिस्ट्रिक्ट में
33 मेडिकल कॉलेजेस भी हम लोग लगाए। उस तरह से तेलंगाना हर एक चीज में आगे बढ़ रहा है। उसी का वजह से आने वाला टाइम में जो तेलंगाना का मॉडल को भी जो अच्छा है उसको लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में हम यही बोलना चाहता है, जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल बहुत दिन से पेंडिंग है, वो वुमेन रिजर्वेशन का बिल को जरूर जो है ना नया पार्लियामेंट बहुत बहुत धन्यवाद, तो उसको करें। थैंक यू। एक ही पॉइंट है साहब, ओबीसी का रिजर्वेशन भी जरूर जो है ये दो बिल को ये नया पार्लियामेंट में पहले सेशन में लेने से अच्छा रहेगा। थैंक यू चेयरमैन। थैंक यू। श्री हसनैन मसूदी जी, काइंडली 5 minutes में। You start with me, this honorable chairman. या अरे आप बैठिए, अरे काइंडली बी सीटेड। Honorable chairman, Parliament occupies key position in a democracy. It is therefore more than appropriate to sit up after 75 years of its journey and trace the high and low points of this journey. Sir, where there have been a number of achievements during the last 75 years and important, significant steps in strengthening democracy, there have been low points as well. Sir, as the House is aware, Jammu and Kashmir was not part of the country on 15th August 1947. Jammu and Kashmir in peculiar circumstances joined much after 2.5 months. That was on 27th October 1947. So there was it is this August House that gave special status to Jammu and Kashmir, and it was a decision reached with consensus, without any dissent, without any amendment to the proposal, and without any kind of reservations. Sir, under the Jammu Kashmir, with around 75% Muslim population and contiguity as regards Mountbatten Plan of 3rd June 1947 had to take a different direction. But for more than 70%. But it took a different journey, and as I said, in a particular background. And our party, though not party to our Jammu and Kashmir National Conference, though not a party to the accession, but all the same did favor it, under the belief that it is better, the people of Jammu and Kashmir will be better off if they join a democratic country, a country having belief in secularism and in rule of law. So this is the reason, and there was another reason, that Lord Mountbatten, while accepting the accession, had made it conditional and said that in peculiar circumstances they will go for a referendum. And the country, in its complaint to the UN Security Council in Para 6, has also had made it clear that it would like to go for a referendum. So the Constituent Assembly thought it proper to put it in paragraph 21 of the Constitution. Be that as it may, this was followed by this House, August House, approved Delhi Agreement of 1952. It was introduced by the Prime Minister on July 24th, 1952, and it was approved by the Parliament after thorough discussion. And Jammu and Kashmir state was given a right to have its own flag, its own constitution, and an elected head of the state. Sir, however, while the Parliament did adhere to the pledges made to the people of Jammu and Kashmir, but unfortunately the low point was 5th August 2019, when the state was stripped of its special status, and that too without adhering to the Constitution, without any respect for the Constitution, and surprisingly, this House, without adhering to the spirit and letter and spirit of the Constitution, divided it into two union territories. It was unprecedented, in a most undemocratic, and without any precedent, and without the sanction of Article 3 and Article 1 of the Constitution. So these are when we just map out, trace the course of this journey, we cannot lose sight of these events that I think, in my opinion, were not in tune with the mandate of the Constitution. Sir, way back in
on 15th January 1948. That is how this Article 370 was made part of the Constitution. The representative of the Indian representative in the United Security Council had made it very clear that they are permitted to have a referendum, and the people of Jammu and Kashmir will have a right to join either of the two dominions. And if they feel it proper, they decide they would even remain independent and seek membership of the United Nations. So in that background, sir, the decisions taken on 5th August 2019 were not only undemocratic, unilateral, but were not in accordance with the Constitution. Now, when we just go ahead, I mean, see, now it has been fair on part of the Lieutenant Governor to admit that. No, I mean, when we at my turn, why don't you stop? We are just allow me to. You conclude kindly. So he has been fair enough to admit that it has yet to be integrated. Why? Because the time has shown what are the events that are taking place in Jammu and Kashmir. As we sit here in this house, a battle is going on in a suburb of my constituency. It is not in an interior. And there are back-to-back 15 encounters, 15 conflicts have been there since 1st January, and the conflicts, the encounters have claimed lives of more than 50. Please conclude. And the civilians. Sir, so we have not achieved anything by taking the decisions that were on 5th August. So this Parliament, this House, while taking those decisions, is under an obligation to go for an introspection. Thank you very much. Seconds. Just wait for 2 minutes. Give me 2 minutes. Sir, then... We are having so many members. Sir, just 2 minutes. Sir, I fully support the suggestions made by Madam Supriya ji and also... Thank you. Shri Chirag Paswan ji. Just 2 minutes. One second. Within 2 minutes. Paswan ji, conclude in 1 minute. Within 2 minutes. Conclude. Chirag ji, 1 second. Within 2 minutes. Conclude. So there is, I mean, whatever is happening on ground, demands a shift in approach, and the shift to second is that, see, we of late we have seen in this 17th Lok Sabha, we have seen that the conventional tools of the Parliament, that is like adjourn motion. And I come to the see, like the tools that are known and recognized universally recognized tools of a parliamentarian that have not been. Thank you very much, Shri Chirag Paswan. Thank you so much, Speaker sir, for giving me this opportunity. कि भारतीय संसद की 75 सालों की इस यात्रा पर तमाम सम्मान्य साथी अपने अपने अनुभव, अपनी अपनी यादें, अपनी अपनी उपलब्धियां, उसका जिक्र यहां पर कर रहे हैं। मुझे लगता है सर, एक दिन कुछ घंटे इन 75 सालों की यात्रा को समअप करके बताने के लिए बहुत कम है, पर मैं बधाई दूंगा जिस तरीके से आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने कम समय में इतने खूबसूरत शब्दों के साथ जिस तरीके से इस 75 साल की यात्रा के बारे में उन्होंने पूरा बखान किया, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान से लेकर इस संसद को चलाने में छोटे से छोटे कर्मचारी के योगदान तक की उन्होंने सराहना की, उनको भी उन्होंने सम्मान देने का काम किया। मीडिया के हमारे साथियों का भी उन्होंने जिक्र किया। यकीनन कई ऐसी यादें सर इन 75 सालों में रही हैं। सेकेंड टाइमर मेंबर पार्लियामेंट हूं, युवा सांसद हूं, कंपैरेटिवली संभवतः मेरा अनुभव बाकियों से कुछ कम होगा, पर 9 साल का मेरा भी अपना अनुभव है। पर इन 9 सालों से ज्यादा सर मेरा अनुभव मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की वजह से रहा। बचपन से जब से होश संभाला, उनके माध्यम से इस संसद की कार्य प्रणाली को समझा, इस संसद की कार्य शैली को समझा, और जब पहली बार इस लोकसभा में आया तो उन्हीं का ही हाथ पकड़कर आया। आज जब हम लोग नई संसद में जा रहे हैं तो यकीनन कई ऐसी यादें कौंधती हैं और यकीनन एक भावुक क्षण है। महसूस होता है कि जिस जगह पर मुझे मेरे पिता लेकर आए थे, आज एक नई यात्रा की ओर हम लोग जा रहे हैं, पर प्रधानमंत्री जी ने भी उसको भी बहुत खूबसूरती से बताया कि ये हम जैसे
जो आज की तारीख में इस लोकसभा में मौजूद है, संसद में मौजूद है, राज्यसभा के भी सदस्य, हम लोग ले ये गर्व का लम्हा है, जहां एक तरफ हम लोग इतिहास के भी हम लोग साक्षी रहे हैं, वहीं एक नई ऊर्जा के साथ भविष्य की भी ओर हम लोग जा रहे हैं। तो कड़ी बनने का सौभाग्य हम लोग को मिला इतिहास और भविष्य के बीच, जो यकीनन मौजूद यहाँ पे तमाम सांसदों के लिए एक गर्व की अनुभूति कराता है। सर, आज जब हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यकीनन हर राजनीतिक दल के पास अपने अपने एजेंडे हैं, और एजेंडे हैं इसीलिए वो राजनीतिक दल है। हर किसी ने अपनी अपनी बातों को रखा कि इस विशेष सत्र में ये चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चा होनी चाहिए, ये मुद्दे आने चाहिए। यकीनन सर, मेरी भी पार्टी है, हम भी चाहते हैं कि कई विषय हैं जिसपे चर्चा होनी चाहिए। मैं युवा हूं, हमेशा इस बार का मैं पक्षधर रहा हूं कि भारत में एक युवा कमीशन का गठन होना चाहिए, एक नेशनल युवा कमीशन, एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जहां पे युवा अपनी तमाम समस्याओं के साथ जाएं और अपना समाधान लेकर आए। भारत एक युवा देश है, अलग अलग आयोग यहां पर बने हैं, महिला आयोग है, बाल आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है। ऐसे में देश में एक युवा आयोग के गठन का ये समय है, ये होना चाहिए। साथ ही में हम लोग चाहते हैं सर, विमेन रिजर्वेशन बिल पे भी चर्चा हो रही थी, वो भी हम लोग चाहते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल जल्द से जल्द आए। आज इतनी भारी संख्या में महिला सांसद जो यहाँ पे मौजूद हैं, अपने सामर्थ्य पर जीत कर आई हैं। ऐसे में इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बट विमेन रिजर्वेशन बिल आने से जरूर और बल मिलेगा और ताकत मिलेगी, उसका भी हम लोग समर्थन करते हैं। और साथ ही में लंबे समय से हम लोग की मांग रही है एक इंडियन जुडिशियल सर्विसेज को लेकर। हम लोग चाहते हैं कि एक जुडिशियल सर्विसेज का गठन हो, ताकि समाज के वंचित वर्ग से आने वाले लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां से वो न्याय दिलाने की प्रक्रिया का वो हिस्सा बन सके, ताकि उनके साथ जो अभी तक भी रह रहकर भेदभाव या अन्याय होता है उसको दूर किया जा सके। पर इन तमाम विषयों को अलग अलग मंचों पे हम लोगों ने रखा है सर, ऑल पार्टी मीटिंग होती है वहां पर भी, पर हम लोग सिर्फ इन एंटीसिपेशन की क्या होगा, कहीं ना कहीं इस लम्हे की खूबसूरती को हम लोग खो रहे हैं। आज मैं बस यही आग्रह करूंगा कि कौन सा बिल आ रहा है, नहीं आ रहा है, पर ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, ये इतिहास और भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी को लेकर बुलाया गया है। हम लोग का ध्यान यकीनन केंद्रित उस तरफ भी होना चाहिए, ताकि इस लम्हे की खूबसूरती को हम ना भूल जाएं। पूरा देश नजर लगाए इस पर, देख रहा है कि कैसे हम लोग यहां से दूसरी नई संसद में हम लोग जा रहे हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। और आज सर, जब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के आधार पर जिस तरीके से भारतीय संसद के 75 सालों का इतिहास रहा है, मैं उम्मीद ही नहीं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही हम लोग एक विकसित देश की हम लोग नींव रखने जा रहे हैं। और जो लक्ष्य है 2047 में विकसित देश के निर्माण का, उस लक्ष्य को हम लोग नई संसद से हम लोग जरूर अचीव कर पाएंगे। अंत में अपनी बातों को समाप्त करूं सर, मैं जरूर अपने क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करूंगा, और मुझे लगता है हम सब यहाँ पर हैं भारत की जनता की वजह से, अपने अपने क्षेत्रवासियों की वजह से। मैं जमुई से आता हूं सर, मैं जमुई वासियों का धन्यवाद करूंगा। मेरे नेता, मेरे पिता अगर आज जीवित होते और यहाँ पर होते तो जरूर वो भी अपनी कर्मभूमि हाजीपुर का जिक्र करते। मैं पूरे अपने प्रदेश बिहार का और देशवासियों का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने भारतीय संसद को इतना सशक्त, इतना मजबूत बनाया कि आज जब दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो वो G20 जैसे इतने भव्य आयोजन को देखकर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया, उसको देखकर देश ही नहीं पूरी दुनिया बढ़ते विकसित भारत के बढ़ते कदमों की सराहना करती है। एक बार फिर से मैं प्रधानमंत्री जी का भारत को नई संसद देने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं, और यहां पर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री E.T. मोहम्मद बशीर। Sir, thank you very much. Sir, it gives me immense pleasure in participating in this discussion pertaining to the parliamentary journey of 75 years. Sir, firstly, my tribute to those who dedicated their life to get the freedom for us from the shackles of the British Empire. Similarly, sir, my salute to the memories of our forefathers who spent days and days for about 3 years in making our constitution and their work in the Constituent Assembly. Similarly, sir, this is the high time for an introspection, whether we have succeeded in realizing the dreams of our founder leaders and whether we did justice to their thoughts and aspirations.
So Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru, in his historic speech, Tryst with Destiny, which was delivered in the midnight of 14th August 1947 to the Indian Constitutional Assembly in the Parliament. I quote, "We are citizens of this great country on the verge of bold advance, and we have to live up to the high standard. All of us, whatever religion we may belong, are equally the children of our India, equal rights, privilege, and obligation." Sir, he also added, "We cannot encourage communalism or narrow-mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thoughts, in action." Sir, this is a mantra which a government can, whatever may be the government, this can be a mantra of the House. Similarly, sir, I would like to say, now, if you ask a question to our core heart, whether we are moving ahead to the truthful destination, with all the politeness, I would like to say that the destination to which we are moving now is dangerous. I have got enough things to say, but I don't want to take all the details. Sir, contemporary Indian situation. Sir, what is happening in this country now? Constitution has become a silent spectator. We are doing anything according to our liking. Constitution is nothing. You have undermined the Constitution of India. Sir, atrocities against minorities with regard to their security, identity, and safety. All these things are repeating one after another. Discrimination and deprivation of SC, ST and marginalized section, that is also, sir, widening like anything. Human rights violation. Make this country ashamed before the world, sir. This morning, when the Prime Minister was speaking, he was saying the worldwide appreciation is there for India. World leaders, they all say many good things about India. We have to realize, international bodies, other countries have also saying that human rights violations are taking place in a big way in India. That also is to be considered properly. Sir, what is that we are doing? We are distorting the history, sir. That's an offense we are doing. Sir, what we are doing is, you are distorting the history according to your will and pleasure. You are distorting it and making it upside down, sir. Communal polarization, destruction of secularism, disrespect to the democratic principle happening with the blessing of the government. Sir, we have to realize, we were always arguing for federalism. That also is suffering a lot. Selling out the wealth of the nation to big business tycoon, that also is taking place in this country, sir. Yes, Mr. We are, kindly give me 2-3 minutes, sir. Because we are renaming the places and institutions, and we are forgetting, or we are wiping out the names of the forefathers. Now, India controversy, India, Bharat. See, nobody is against Bharat, sir. What is wrong with India? This was there forever. But what I am asking is, if this India terminology give you any kind of sleepless nights, that's something different. There is no cure for that. That's another thing. Sir, we have agrarian crisis. In fact, government is not at all democratic way they are doing. Sir, new threat. A new threat. I will be taking only this point, sir. Yes. What is that new threat? Political parties and other system. You are threatening them, saying that enforcement agencies, investigation agencies, and things like that. I remember Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi said to British people, what he said. No, please. Yes, sir, I am coming to it. What he said, you can chain me. Mahatma Gandhi said, you can chain me. You can torture me. You can even destroy this body. But you will never imprison my mind. Thank you. So that was this. I am concluding. So what I am asking is, another thing, last point is that, sir. Now a new threat. What is that? Encroachment on this challenge against this freedom of expression. So what is happening? Freedom of expression is the strongest pillar as far as the Constitution is concerned.
Sir, what is happening in that? Thank If you. a man speak, a political leader speak something against the government, then the government says that you will be under prison. How many journalists are languishing in Indian jails? That also may kindly be Thank you very much. considered. So Next. that is the thing. Sir, I would like to say that. Conclude, please. This government, you are spoiling the democratic principle. You are far away from the democratic principle. But you are very close to the draconian kind of administration. I would like to conclude with saying that you had to correct your mistake. You are doing a lot of injustice for this great country. With this few words, sir, I conclude. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Srimati Harsimrat Kaur Badal ji. Thank you, sir. Sir, I stand here today on the 75th year of our democracy in this parliament, probably the last day in this August House, in the four walls of this August House. I stand here as a woman that represents 50% of your population. I come from a minority community, which is only probably 1.7% of the total 20% of the minority community. And I represent the backbone of this nation, the farming community, coming from the state of Punjab, which brought around the Green Revolution and fed the millions of hungry and needy people for the last 50 years of this country since its freedom. Sir, I would also like to say that this small community made the largest sacrifices for our freedom struggle. It may be a small community, but this brave community that fought the battle for the freedom struggle, where the highest number of people to reach Kala Pani was from Punjab, the highest number of hangings were of the Punjabis. It was on the borders of Punjab, really, that the division of the country took place. So the largest suffering, then the largest bloodshed that took place to ensure this freedom was on the borders of Punjab. But, sir, I would like to go back to even beyond this. 350 years ago, sir, our ninth Guru, Shri Guru Tegh Bahadur Sahib, known as the Hind Ki Chadar, the only example in the world where an individual of one community walked all the way to Delhi to get martyred, to sacrifice himself to save a minority community, the Kashmiri Pandits of Kashmir. Sir, this example in itself is one of its kind, and I would say the basis, the very foundations of human rights, equality, freedom of religion was laid by our ninth Guru, who came here and martyred himself and sacrificed himself a few yards from here to ensure the religious freedom of the Kashmiri Muslims, and that laid down the foundations of where the entire democracy and the voice of the people stand. And after that, his grandsons, aged 9 and 7, were bricked alive, fighting for saving and living by their own religion for religious freedom. So, sir, first of all, I would like that this House should altogether unanimously give homage to our ninth Guru, the Hind Ki Chadar, who laid the foundations of democracy 400, 350 years ago. And it would be befitting, sir, if this government would actually dedicate this old parliament as we shift to the new parliament to Hind Ki Chadar, so that the teachings of our ninth Guru may be followed in the times to come. Sir, in the same way, I would like to also say that I am the proud granddaughter of a grandfather, Sir Surjit Singh Majithia, who was a member of parliament from the first, second and third parliament here as defence minister. And after that, sir, I had the honour of being the daughter-in-law of Sir Prakash Singh Badal, who was in the 6th parliament here, and someone who walked on the ideals of our great gurus and for parliamentary democracy in true letter and spirit. More powers to the state and inclusiveness, sarbat ka bhala, as what our religion preaches, is what Sir Prakash Singh Badal's life was about, who led the first battle against emergency, which was the biggest dictatorship since Indian freedom. And he led the fight against emergency to lead the first morcha to court arrest. And for 19 months he spent in jail and was the last one to leave the jail during emergency, making this fight for democracy his personal fight. And his entire life was dedicated
towards more powers to the state and strengthening the federal structure. Sir, today I also take this opportunity to salute both these men, and I would say that they have been a role model in inspiring what parliamentary democracy stands for. Sir, as a woman, I would definitely like to say that in my time in the last years of what I have understood of Parliament, if there was one thing which I saw in my lifetime, which I never thought that I would even get a chance to voice in this House, was as a young 18-year-old who saw the murder of democracy, the murder of minorities, and the murder of religious freedom in 1984 when the genocide of the Sikhs took place. As an 18-year-old, I was a victim of this. My community was a victim. It is shocking that in a free and independent India, the state itself, the Congress government, would stoop down to killing an entire generation of Sikhs because of whatever reasons, what they may have thought. This is the Congress which attacked our holy shrines, which put in tanks and bullets into our Akal Takht Sahib, killed innocent people over there, and then murdered thousands of Sikhs. Sir, this state-sponsored genocide is unheard of in the history of our country. And if this government had ensured justice, which after 40 years we have still not got, if they had ensured justice, maybe bigger tragedies would not have happened. Sir, I also ask this government that before we finish and shut the doors of this Parliament, this House needs to unanimously condemn the Sikh genocide. No, sir, very important, 2, 3. Unanimously condemn the 1984 Sikh genocide, which has not been done till date, and nor have they received justice till date. Sir, secondly, I would like to point out that women reservation bill must come in. Sir, in our first Parliament, in the first Lok Sabha, sir, there were 46%. There were 24 women, sir, and today in the 17th Parliament there are only 78%. Yes, madam, now please. Sir, just 2 minutes, very important, 2, 3 points, sir. Sir, in the first election of our country, 46% women turnout, and now 67, even more than the men. How can women issues be addressed if there is not proper representation? I demand women reservation, sir. Yes. If it is not enough women, that is why it takes a Nirbhaya to bring in strong laws. That's why our women wrestlers who bring laurels to the country have to fight for months to get justice, and that is why a horrific Manipur incident of atrocity on a women, a no-confidence motion has to come in to make this government speak. I think, sir, more women are needed in this Parliament. Thank you very much. And, sir, lastly, I would like to say, for the farmers which I represent, which feeds this entire nation, sir, it is time we stop making hollow promises about doubling farmer income, but it's time that we ensure that that farmer, I come from the state which has fed this nation. Sir, today the farmer has lost his water. His ground is contaminated. So he cannot feed his children. He cannot educate his children. He cannot have health benefits. Sir, 2 minutes. Sir, 2 minutes, sir. No, please. Sir, no, please. Sir, just 1 second. No, already you have to wait more than 8 minutes. I'm concluding, sir. Sir, today, आज हमारे किसान के पास, sir, ना तो उसके लिए हेल्थ के लिए इलाज के लिए पैसे, ना बच्चों को पढ़ा सकता है. आज मौसम के करके उसका इतना बुरा हाल है, वो खुदकुशी कर रहा है. सब कुछ ना कुछ किसानों के बारे में सोचा जाए. उनको इस भद्दर हालत में 75 साल के बाद डबल फार्मर इनकम का स्लोगन नहीं, लेकिन उनके जेब में कुछ पैसे पहुंचे ताकि वो भी आत्मसम्मान से ये नए भारत में आत्मनिर्भर होके अपने खानदान का ख्याल रख सके. Thank you very much, Sri K. Subrayan. ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பின் 75 ஆண்டுகால அனுபவங்களை பரிசீலிக்கின்ற நிகழ்வாக இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. தேசிய விடுதலை இயக்கத்திலும் தேசிய விடுதலைக்கு பின்னர் இந்திய வளர்ச்சியிலும் பெரும் பங்காற்றிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நான் சில கருத்துக்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். 75 ஆண்டு கால அனுபவங்கள் என்பது துயரம் நிறைந்தது இருக்கிறது, மகிழ்ச்சி தரத்தக்க அம்சங்களும் இருக்கின்றன. ஆனால் அம்பேத்கர் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை நான் இந்த நேரத்தில் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். 1949 நவம்பர் 25, 26 அரசியல் நிர்ணய சபையில் அரசியல் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு நிறைவுரையாற்றிய போது குறிப்பிட்டார்கள், எதிர்காலத்தில் இந்தியர்கள்
நாட்டை காட்டிலும் மதத்தை பெரிதாக கருதுவார்களா அல்லது மதத்தை காட்டிலும் நாட்டை பெரிதாக கருதுவார்களா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் நாட்டை காட்டிலும் மதத்தை பெரிதாக கருதுவார்களே ஆனால் இந்தியா இரண்டாவது முறையாக மீள முடியாத சிக்கலில் சிக்கி சீரழியும் என்று எச்சரித்தார். அந்த எச்சரிக்கையை இந்த 75 ஆண்டு கால அனுபவங்களில் கடந்த 9 ஆண்டு காலம் ஏற்பட்டிருக்கிற அனுபவம் என்பது துயரம் நிறைந்ததாகும். மதிப்புமிக்க உயிர்கள் பலவற்றை கொடுத்து பெற்ற விடுதலை இன்றைக்கு கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டு விட்டது. நாடு என்பது வெறும் வகுப்பறைகளில் தொங்குகிற மேப்பில் இல்லை, நாட்டு மக்கள் தான். 120 கோடி மக்களின் ஒட்டுமொத்த நலனை பிரதிபலிக்க வேண்டும். 140 கோடி மக்களின் நலனை பிரதிபலிப்பதுதான் தேசத்தின் நலனை பிரதிபலிப்பதாகும். எனவே தேச நலன் என்பது வெறும் எல்லை கோடுகளில் இல்லை, மரம் அட்டைகளில் இல்லை, தார் ரோடுகளில் இல்லை. தேசம் என்பது மக்கள் தான். மக்கள் பல மதங்களை சார்ந்து ஜாதிகளை சார்ந்து இருக்கிறார்கள். அனைவரின் நலனை பிரதிபலிப்பதுதான் தேசத்தை பிரதிபலிப்பதாகும். எனவே அந்த அக்கறையோடு பிரதிபலிக்கிற போக்கு கடந்த 9 ஆண்டு காலமாக இல்லை என்பது வரலாற்றில் ஏற்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய விபரீதமாகும். அந்த விபரீதம் இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதற்குரிய பல்வேறு காரணங்களை நான் விரித்து சொல்ல வேண்டும், ஆனால் நேரம் இல்லை. வழங்கப்படுகிற 2 நிமிடங்களில் இந்த 75 ஆண்டு கால அனுபவங்களை விரிவாக சொல்ல இயலாது. எனவே 2 விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்லி விடைபெற விரும்புகிறேன். முக்கியமான ஒரு விஷயம், இந்த 75 ஆண்டுகளில் திட்டமிட்டே ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பு தகர்க்கப்படுகிறது. ஜனநாயகத்தின் பெயரால் ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டு ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பை தகர்க்கிற போக்கு நீடிக்கிறது. இந்த போக்கு ஆபத்தானதாகும். அதே மாதிரி நாடாளுமன்ற முறையை படிக்கட்டுகளை மண்டியிட்டு வணங்குவதால் நாடாளுமன்றம் வளர்ந்து விடாது. நாடாளுமன்ற உள்ளடக்கத்தை காப்பாற்றுகிற ஆட்சியாக இந்த ஆட்சியாளர்கள் இல்லை. இவர்கள் நாட்டை நேசிக்கவில்லை, நாடாளுமன்ற முறைகளை நேசிக்கவில்லை, வெறும் தோற்றங்களை மட்டுமே வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே தேச நலனை பிரதிபலிக்கவில்லை, நாட்டு நலனையும் பிரதிபலிக்கவில்லை, நாடாளுமன்ற முறைகளையும் காப்பாற்றவில்லை, ஜனநாயக மரபுகளையும் காப்பாற்றவில்லை, அரசியல் சாசனத்தையும் காப்பாற்றவில்லை. எனவே இந்த ஆட்சி நீடிப்பது 75 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் விலை மதிப்பற்ற உயிர்கள் பலவற்றை கொடுத்து விடுதலை பெற்ற விடுதலையை இழக்க நேரிடும். G20 பற்றி பெரும் பாராட்டு சொன்னார்கள். அமெரிக்காவோடு என்ன ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கிறது? இஸ்ரேலோடு என்ன ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கிறது? ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் உலக அரங்கில் மதிப்புமிக்க ஒரு பிம்பம் இந்தியாவுக்கு உருவாயிற்று. அந்த பிம்பம் சிதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு இஸ்ரேலோடு கூட்டணி, யுஎஸ்இன் பட்டிகளில் கட்டப்பட்டுள்ள மாடுகள் மாதிரி இன்றைக்கு இந்தியா அவர்களுடைய கைக்கு சென்றிருக்கிறது. இவற்றிலிருந்து மீட்க வேண்டுமானால் இந்த ஆட்சி ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றாது, அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்றாது, நாடாளுமன்ற முறையை காப்பாற்றாது. எனவே இதற்கு விடிவு கொடுப்பதன் மூலம்தான் இந்தியாவை காப்பாற்ற முடியும், இந்திய அரசியலை காப்பாற்ற முடியும், ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற முடியும். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். ஸ்ரீ ஜெயதேவ் கல்லாஜி. Sir. You are in your seat? Okay. Yes. Thank you, sir. Sir, it is a momentous day in the history of our parliament. It was a historic day that this House, which witnessed our freedom struggle, witnessed India's tryst with destiny, witnessed the creation of the Indian Constitution, and is now witnessing as we are bidding adieu to this great House, sir.
as members of Parliament, we have dedicated ourselves to serving our beloved nation. Over the past 7 decades, as the Honourable Prime Minister has noted, more than 8,500 members have tirelessly served our Mother India within these hallowed halls. It's worth noting that many of these dedicated individuals hail from Andhra Pradesh as well. On this solemn occasion, I wish to pay my heartfelt respects and express my profound gratitude to each of them for their unwavering service. Sir, I'm here to serve my second term, extending my services to the people of my constituency, state and country. It would be remiss of me not to mention a towering figure in Indian politics, the great Gandhian, the legendary freedom fighter, Professor Acharya N.G. Ranga. He served as a member of the Central Legislative Assembly from 1930 onwards and as a member of the Indian Parliament since independence until 1991. Professor Ranga achieved the remarkable feat of 60 years of service in this House, starting with the Constituent Legislative Assembly in 1930, and 50 years as a parliamentarian, earning him a place in the Guinness Book of World Records. Many of you have seen his statue at Building Gate number 4 of this Parliament House. Sir, Professor Ranga was an inspiration to generations of politicians, including my own grandfather, Sri Paturi Rajgopal Naidu, a freedom fighter and two-time Member of Parliament during the 6th and 7th Lok Sabha. Another great leader from the state of Andhra Pradesh that I should mention here is Sri GMC Balayogi, who served as Speaker for the 11th and 12th Lok Sabha and who was elected unanimously and served with distinction. I take this opportunity to pay my humble tributes to them and to all the other leaders from erstwhile and current state of Andhra Pradesh. Sir, I feel 7 decades' journey in the history of any nation is too short a period. But in this short period, we have shown the world what we are capable of. We have proved to the world, particularly the British, who wished India to become a failed state, that Bharat is second to none in every respect. We have proved and demonstrated to the world, the recent example being the G20 summit, that India's civilization, culture, philosophy, and more than anything else, the concept of Vasudhaiva Kutumbakam cannot be destroyed. We could achieve these in spite of being home to almost every single religion in the world, and also to a vast array of diverse cultures, languages, syncretic heritage with rich history of democracy and non-violence. Sir, today's occasion is not to score brownie points. Today's occasion, I feel, is to remember our achievements, successes, experiences, and where we have faltered, and address them through the current discussion. It is also our duty to express what lessons that we have learned from our past mistakes and give inputs for making this country great again. Sir, as Modi ji rightly says, that every government, every PM contributed towards the growth, progress and development of the country. The degree of pace, commitment and resolve might be different, but everyone contributed whatever they could for the sake of the country. So on this historic occasion, I remember all those great leaders, and I pay tributes on behalf of my Telugu Desam party and on my own behalf. But I would also like to highlight that it was during this period that the bifurcation of Andhra Pradesh was enacted. Sir, this Parliament, as the Honourable Prime Minister said in the morning, is a sacred institution, and whatever promise it makes will be sacrosanct. But the commitments made in the AP Reorganisation Act and on this floor are yet to be fulfilled, sir. Even the special category status, which was promised on the floor of this House, has not been implemented till date. I only pray that these sacred promises are implemented without any further delay. Sir, the new capital of Andhra Pradesh is in doldrums. Nobody knows what is the capital of Andhra Pradesh today. The farmers of Amaravati, who have been given more than 33,000 acres of land, are in a dharna for nearly 4 years. I wish and pray that Amaravati will remain as the sole capital of AP and that Government of India should intervene and do the needful in this regard. Sir, from 2014, under the leadership of Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, there have been many initiatives that have been introduced aimed at making India Atmanirbhar and positioning it as a global power. Of the many achievements over the past 9 years, I would rate financial inclusion through Jan Dhan Yojana as the most successful achievement, which helped inclusive growth and reduced corruption, which otherwise, as per Sri Rajiv Gandhi, only 15 paisa used to reach the beneficiaries. Yes, Jaydev Gallaji. Sir, just give me few more minutes. There are some very important points I want to make. The second is Ujjwala Yojana, which helped 10 crore women escape from the cooking with firewood, coal, dung, cakes, etc., instead of using safe, clean and environment-friendly LPG. So I'll skip to the end, sir. Sir, my party, the Telugu Desam Party,
has played a pivotal role in this country's politics and growth. Both Sri NTR and Sri Chandrababu Naidu Garu played key roles in molding and shaping both the National Front and the United Front governments. Sir, you may recall that when Sri Vajpayee returned to power in 1999, after having lost the no-confidence motion, the TDP with 29 MPs in the Lok Sabha was the strongest partner of the NDA. And during that government, many key reforms, such as banking sector reforms, telecommunication reforms, aviation reforms, the Golden Quadrilateral Project, the National Highway Development Project, and the promotion of information technology, which saw the establishment of technology parks and IT zones. All these reforms and projects were envisioned by Sri Chandrababu Naidu Garu and implemented by the central government, playing a key role in shaping India's economic growth. Sir, Dr. Kalam was also made president with the support of TDP and Sri Chandrababu Naidu Garu. Yes. Even in the recent past, the suggestions provided by him during the COVID pandemic helped our country to effectively fight it and come out resilient and stronger. And today we see that an unblemished, seasoned leader being arrested with political incarceration. It is a black day to democracy and the history of AP, sir. I wish to bring to the notice of the Honourable Prime Minister and the Honourable Home Minister how law is blatantly violated, cleverly twisted and maliciously to achieve political vendetta by arresting Sri Chandrababu Garu. Sir, 2 minutes, I've finished, sir. No. The main allegation in the case that 10% share of the state government, which comes to about 371 crores, for the purpose of skill development, had been released to the project implementation companies and was swindled through shell companies. But the CID has been unable to establish that the money were entrusted to CBN or his family members. Sir, if 371 crore is siphoned, how 34 technical development? One second, Mithun Reddy, sir, please. let me you just conclude, because sir. this is last day of the. See, this is the last day in this parliament. Please conclude. This is the most important without having any controversial issues. Sir, it's the most important issue. So the spirit of today's discussion is not such a manner. Just conclude with the sentence, please. 1 second. Sir, all I wish to submit is that this kind of political vendetta, misuse of enforcement agencies and political incarceration should be stopped in every state. And I appeal to the Honourable Prime Minister and Home Minister to direct the officials you can respond to it. to immediately release Sri Chandrababu Naidu Garu. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, yes, Sri P.V. Mithun Reddy. Sir, thank you, sir. Try to avoid the controversial issues, sir, because it is not a controversy. I just want to put the facts straight. I just want to talk only on that, and I just want to put the facts straight. Sir, like what the Teludesam party, Mr. Gallajeev spoke, I just want to put the facts straight and what has happened in the Chandrababu Naidu case, sir. When Chandrababu Naidu was CM, a skill development program, which the government claimed that Siemens was part of it, and a tripartite agreement was made with a corporation for. No, why you have given them a chance to say? No, I should. The government had to spend 10%. 3,300 crores was the project cost, and 10% was the share of the government, sir. In the GO, whatever was set in the GO was not carried out in the MOU, and without a rupee being paid, sir. Siemens vehemently, they said that we are not a part of this. We are not a part of this, and we don't have anything to do with the 371 crores. Wait. We don't have. See, Mithunji, you please. Sir,